हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटोर आशीष गर्ग और अब मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक ऐसा सेशन जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आप जाके अपना एग्ज़ाम लॉ अगर आपको करने का मन है तो लॉ एज अ करियर परस्यू करने का मन है तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, थंबनेल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लैट और एलेट तो एक ऐसा नाम हमारे पास बन ही चुका है कि जिसमें हमें पता है कि भाई क्लैट जाना है या एलेट जाना है तो उसमें प्रिपरेशन भी हम करते रहते हैं। और इस साल तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई क्लैट और ये जो एलेट है ये आपके दोनों हो रहे हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, दिसंबर में दोनों का पेपर है। आपका एक पेपर is in this is on 18th and this is on 11th। ठीक है, यहाँ से आप NLUs में जाते हैं, जितने भी NLUs हैं हमारे कंट्रीज में, और एलेट से आप NLU दिल्ली में प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारे पास है IIM रोहतक है जो आपको एक डिग्री ऑफर करता है। उसके बाद अगर आपको अब्रॉड जाने का मन है तो आपके पास LSAT इंडिया है। उसके बाद आपके पास जामिया है और इन्हीं में एक UPES भी मान लीजिए या जिंदल भी ला लीजिए। इनमें से ही एक कॉलेज हमारे पास उभर के आता है जिसका नाम है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी सालों से बच्चों को एक ऑफर देखते आ रहा है, एक माध्यम बनता है वो कि जहाँ पर आप जाके अपनी पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। इसके दो जो मेजर कैंपसेस हैं जिस पे अभी हम लॉ के बारे में बात करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा भी उसके बारे में। तो वो एक तो है इनका पुणे में लवासा करके एक जगह है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पर ये जो है इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा है हमारे पास यहाँ नोएडा में, जहाँ पर ये आपको अपना पढ़ाई करवाते हैं। इनके दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है सेट जनरल, ठीक है, और एक होता है इनका स्लैट। ये दो एग्ज़ाम होते हैं। फिर एक इनका इंजीनियरिंग और उसके लिए भी होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये दो इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है सेट जनरल और एक होता है स्लैट। ये जो सेट जनरल होता है दिस इज़ फॉर प्रोग्राम्स लाइक BBA, ठीक है, और BCA और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो भी आपको सेट जनरल देना पड़ता है। और स्लैट जो होता है दिस इज प्राइमरीली फॉर लॉ। तो अगर किसी को लॉ परस्यू करना है फ्रॉम सिम्बायोसिस देन यू कैन गो एंड परस्यू एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज टू एग्जाम्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एग्जाम्स, ये जनरली जो सेट, अभी अगर हम पैंडेमिक को छोड़ दें, क्योंकि पैंडेमिक में तो हमारी सारी की सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन पैंडेमिक के अलावा ये जो आपका प्रोग्राम है या ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका होता है बोर्ड पेपर के बाद। अभी तक तो ऐसे ही होता था, अभी अगर चेंज कर दें तो कुछ नहीं कह सकता मैं, जैसे क्लैट ने भी हमारे साथ चेंज किया है और उन्होंने दिसंबर में कर दिया है। बट नॉर्मली जो पेपर होता है ये आपका बोर्ड पेपर के बाद होता है और आपको अराउंड 45 डेज के आसपास मिलते हैं टू प्रिपेयर फॉर द पेपर एंड देन द पेपर इज कंडक्टेड। इट्स एन ऑनलाइन पेपर। आपका पेपर ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ पर आपको देते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें इसमें पूछती हैं वो हम बात करेंगे अभी। अलग अलग कॉलेजेस हैं, देखिए इसमें सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ SCMS करके है जो कि पुणे, नोएडा, बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद में है। सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट पुणे, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, हैदराबाद, नोएडा एंड नागपुर। ये चार जगह पे आपको लॉ के लिए भी ये देते हैं। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स कम अंडर सिम्बायोसिस। ऑलराइट, इनमें नीडलेस टू से सबसे पुराना पुणे है तो इसलिए कंसिडर टू बी द बेस्ट, फिर नोएडा है एंड देन बाकी आपके पास हैदराबाद एंड नागपुर, ये दो हैं। लेकिन इसमें अगर मेजरली अगर देखा जाए तो आपके पास Pune and Noida are the good ones. ठीक है, now when you say why Pune or why say Noida, the first thing is of course then when we talk about is the faculty. तो अगर आप फैकल्टी की बात करते हैं, द फैकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड, और जब कोई भी फैकल्टी एक्सपीरियंस होती है देन दे गिव यू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, दे गिव यू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। तो अगर मैं लॉ की भी बात करूं तो उसमें मूट कोर्ट्स,
ठीक है, आपके पास केस स्टडीज, उसके बाद आपके पास इंटर्नशिप्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स, उसके बाद आपके पास बहुत सारा जो हम बात करते हैं, सो यू हैव मूड कोर्ट्स, यू हैव केस स्टडीज, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, यू ऑल्सो हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, you have a good infrastructure, you have a good alumni base जो कि आपको नेटवर्किंग में भी काफ़ी हेल्प करता है. एंड व्हेन यू हैव सच थिंग्स वेयर यू हैव मूड कोर्ट्स, केस स्टडीज, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, alumni base, so there is a holistic development that happens in such an institute, right? So therefore when you talk about Pune as well as Noida, you get a lot of exposure, right? And then the proximity, अगर आप देखें तो दिल्ली में you have the high courts, you have the supreme courts, and then Noida is very near to the vicinity, so Delhi NCR में you have a lot of exposure because of that. Similarly when you talk about Pune also gives you a lot of exposure, a lot of Mumbai is very near, and Mumbai is considered to be the financial capital, so I'm sure that a lot of legal matters are also taken care of in Mumbai. Therefore, it becomes of utmost importance that this college and this exam should be on your checklist, that okay, that after post my CLAT and 𝐸-lit, what are the other exams that I will take, should include Symbiosis ka Slat ka paper. Apart from this, I've already given you the list. One college possibly I missed was Christ. So Christ is again one, I think they have this 𝐸𝐸𝐬𝐬 is the name of their exam, so that is also there. So that is what you can take, and so these are the ones that possibly are there. Now if you talk about the set pattern, so this year for set general exam, that is for BBA and economics and mass communication, okay, for eco, mass com and others, right, or BCA, this was the paper. It happened on July 3rd, 2022 Sunday. It's a 1 hour paper. The good part is that it's a 1 hour paper, 60 minutes का paper होता है. There is no negative marking. There is no negative marking. 60 minutes का paper होता है. क्या क्या आता है इसमें? General English के 16 question आते हैं, Quantitative के 16 question आते हैं, General Awareness के 16 question आते हैं, Analytical and Logical Reasoning के 12 questions आते हैं. Total 60 questions and 60 minutes. This is what is the criteria for Symbiosis general exam. ठीक है? Now in this और क्या क्या चीज़ें आती हैं? General English में आपके पास RC, grammar, वही सारी चीज़ें. It's more of a vocab dominant. इसमें आपको idioms भी आ जाते हैं, phrases आ जाते हैं, spellings आ जाती हैं. There's a lot of things that also come here. ठीक है? Then quantitative में it's basic math. बेसिक मैथ के आपके पास ये 16 क्वेश्चन आते हैं मेजरली जो आप कर सकते हैं. जनरल अवेयरनेस, द सिम्बायोसिस इज नोन फॉर देयर स्टैटिक जीके. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम स्टैटिक जीके एंड फ्यू क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट स्टैटिक जीके उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट लगती है मुझे, एंड उसमें काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस आए भी हैं. देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, डायरेक्शन, सीरीज, coding, decoding, these type of questions are very simple. It's very doable. ये 12 questions आपके लिए आराम से doable होते हैं, and then that is the reason out of 60 around 48 to 52, if I say 45 to 52, that is what the cutoff remains. 48 to 52 is for Pune, and then 45 or 40 is between that is there for Noida, and you get the call. Then you have interview, and followed by interview is a written ability test, that is an essay writing. Therefore symbiosis अगर आप target कर रहे हो, आपको exam के साथ साथ एक essay भी लिखना पड़ता है. That is what is there. So this is for general. Now if you talk about law as the thing, this is what law, and it also happened on July 3rd. ठीक है, 9 to 10, again a 60 minutes का paper होता है. In these 60 minutes you have logical reasoning, you have legal reasoning, analytical reasoning, reading comprehension and general knowledge. There is no mathematics. Understand that there is no math
in the paper. Except this, there may be data interpretation के कुछ questions that can come. अब इन्होंने logical reasoning and analytical reasoning इनको दोनों को अलग अलग रखा है, तो इसमें हम data interpretation थोड़ी सी expect कर सकते हैं. Otherwise दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा है और दोनों आप आराम से कर सकते हैं. Then you have legal reasoning. So सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी legal reasoning में you have, but the questions are pretty direct. यहाँ आता है आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग करते हो तो वो सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट या सेक्शन के लिए नहीं है, वो बहुत सारे चीज़ों के लिए है. तो देयरफॉर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग दैट विल बी देयर ओनली. सो देयर कम्स 12 मार्क्स की आती है, तो 12 में से आई थिंक देयर कुड बी 1 मार्क पर क्वेश्चन है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज आई टोल्ड यू. There is no negative marking here, and when there is no negative marking, so people tend to attempt all the questions, right? So 12 क्वेश्चन है तो आपके पास 4 पैसेज आ सकते हैं 3-3 के, या 3 पैसेज आ सकते हैं 4-4 क्वेश्चंस के. इस तरीके से आपके पास कुछ डिफरेंस होगा. अगेन जनरल नॉलेज में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स इज व्हाट दे आस्क यू. अगेन 12 क्वेश्चंस आते हैं और प्रीटी डुएबल होते हैं. अगर आप रेगुलरली करते हो तो जितनी भी क्लासेस अगर आप अटेंड करोगे, ये 12 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील हियर. So this is what the paper looks like for SLAT also. Now the opportunities आपको पता ही है कि यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि पेपर में there is no negative marking. You have 60 minutes. You have +1 for every correct answer. You can attempt all the questions because there is no negative marking. This is on the basis of this year's pattern. अगर ये कुछ चेंज करते हैं, which I don't think so that they will be changing any pattern because they have not changed like past 2 years, so it has remained same. But now if everything is coming back to normal and they want to go back to their original pattern, so we'll have to wait and watch for that thing to happen. Otherwise, Symbiosis is one a reputed institute that we have in our country. You can take that particular checklist and tick it that okay, yes, I will be taking Symbiosis Slat for my law entrance examination. All right, so that is there. Apart from this, I feel that place also matters, and therefore the location of both the campuses, be it Pune or Noida, it plays a very, very important role in your entire development of you as a human being, as a student, and as a budding lawyer. Right, so ये Symbiosis का था. इसमें placements होती हैं. There is a lot of hue and cry, but whenever somebody asks me about placements, so I always say that placements, the college do play a a role in that, but overall if I see, it's only dependent on you as a student. अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, if you are working on yourself right from day one, then definitely you will be in a position to get that particular placement that you are looking for. You will get to work with top-notch legal firms that we have in the country or abroad. But then, of course, you need to work on it. The college will play just as a a comforting zone where it would facilitate so that the companies come to the campus and they take your interview. That is one thing. So you need to work on from day one. You work on your internship, do as many as possible practical internships, understanding, take parts in various forums, and extracurricular activities. I forgot. So when you talk about the extracurricular activities, these extracurricular activities also at Symbiosis play a major role. There are societies, there are clubs that you can join and then enhance your personality by learning from the best and then becoming a best version of you. Therefore, Symbiosis becomes a very, very important, I think, proposition and a choice for you post CLAT and ALET, right? So that is all from my side, where I've told you about the information, I've told you about the pattern, I've told you about a tentative date when the paper happens. I've also told you about faculty, I've told you about the position, the infrastructure and everything. Still, if you have any question, description box mein there is one Google form. Go there, fill it
write my name, I will get in touch with you. And if you have any other query related to any other exam that is there, be it LSAT, be it Christ or Jindal or UPES or IIM Rohtak, if you have any question, you can get in touch with me. My name is 𝐼𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬, and I will be there in this particular journey of you becoming a good lawyer. All right, take care, stay safe, and keep smiling. All right, take care, bye bye, see you.